Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. The next question, fifth question is, find the roots of the following equation, and equation is 16x minus 10 upon x is equal to 27. So see, मैं यहाँ पर equation लिख देता हूँ 16x minus 10 upon x is equal to 27. आप लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 16x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन x इक्वल टू 27. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बिकम 16x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 27x. 16x स्क्वायर माइनस 27x minus 10 equal to 0. Now 16 into 10 is 160. 16 into 10 160 होते हैं. अब 160 के ऐसे फैक्टर जो 27 आए ऐड कराकर दिस इज 32 into 5. 32 into 5 क्या होते हैं स्टूडेंट? 160 एंड 32 में से 5 सब्ट्रैक्ट कराएं तो 27 आता है, तो ये फैक्टर है. 16x स्क्वायर मैं 27 को 32 माइनस 5 लिखता हूँ. ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ ब्रैकेट ओपन कीजिए, दिस विल बिकम 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0. नाउ फर्स्ट टू टर्म 16x स्क्वायर माइनस 32x में से 16x कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट x माइनस 2 एंड लास्ट टू टर्म 5x माइनस 10 में से 5 कॉमन ले लीजिए, अगेन यू विल गेट x माइनस 2. सो अब x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, you will get 16x plus 5x minus 2 equal to 0. Now when 16x plus 5 equal to 0, then x is equal to minus 5 upon 16, and when x minus 2 equal to 0, x is equal to 2. Therefore, roots of given equation, roots for required equation are 2 minus 5 upon 16. This is the answer.